Hello everyone, welcome back to our lecture number 2 of chapter Mechanical Properties of Solids, that is available in class 11 physics. Okay, in today's class we will discuss Hooke's law. So up to stress and strain we have discussed in lecture number 1. So let's start our topic, Hooke's law. So in today's class we have to discuss some theoretical part, that is up to Young's modulus, and after that we will discuss some numericals. So in Hooke's law, what is the statement of Hooke's law? As we know, within elastic limit, stress is directly proportional to strain. But remember, within elastic limit, stress is not proportional to strain exactly. So in order to avoid this confusion, we have to write within proportional limit, stress is directly proportional to strain. Actually, in stress strain curve, it will be discussed in detail. So for now, you simply remember within a proportional limit, stress is directly proportional to strain. Yes. So let's see one more thing. This is suppose a fixed rigid support and elastic material is attached with the support actually. And let us attach a load. This is your load W. And here a scale, measuring scale is there. And calibrations are there in this measuring scale, so that we can record the amount of elongation because of the application of load or external force. Yes. So in a very simple experiment, we can observe with the increase in load, elongation increases. So simply we can say load is proportional to elongation. This is as per Hooke's. As per Robert Hooke, load is directly proportional to elongation. Yes. So we can say F is proportional to delta L. But in stress concept, in concept of stress, we know stress is equals to restoring force per area, per unit area. That means we can say stress is proportional to restoring force. And in case of strain, we know change in length by original length. That means elongation. Change in length means elongation. Elongation by original length. So we can say strain is directly proportional to elongation. Now, instead of this shaded equation, we can write, instead of F, we can say stress is proportional to, instead of delta L, we can write strain. Yes. And this is your modified Hooke's law. This is our modified Hooke's law. And remember, Thomas Young modified this Hooke's law. Thomas Young modified the Hooke's law as stress is proportional to strain. So now we can say, stress is equals to some proportionality constant K into strain. Or you may write E, capital E. You may write capital E. That means E is how much? Stress divided by strain. Yes. So what is E? E is our modulus of elasticity. Remember this thing. E is your modulus of elasticity. So next we come to the next slide. So thus E is equals to stress by strain.
Yes. And here this is your proportionality constant called modulus of elasticity. Called modulus of elasticity. Yes. And its unit is, what is the unit? Stress का unit क्या है? Newton per meter square. And strain is unitless. So as a whole we can say the unit of modulus of elasticity is Newton per meter square. One more important thing is there. So in note point you may write modulus of elasticity depends on nature of material. So mention this thing, modulus of elasticity. First thing, it depends on nature of material. Second thing, it depends on temperature. It depends on temperature. Then another thing, it is independent of dimension of body. That means let us consider a copper wire. L लेंथ का एक कॉपर वायर कंसिडर करो. तो इसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? लेट इट बी वाई. तो उसको आधा करने से, कटिंग करने के बाद जो पीस दिखाई देगा हमको, उसका भी यंग्स मॉडुलस कितना दिखा, उसका भी यंग्स मॉडुलस वाई ही होगा. दैट मीन्स इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ बॉडी, रादर इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल. ओके. So next thing, a simple question I am going to ask you. Mention this. In between stress and strain, which generate first? कौन पहला क्रिएट होगा? Which generates first? Apply your cognitive brain and try to give the answer. Remember, the answer is strain. आंसर को क्या होगा? स्ट्रेन होगा. क्यों? नाउ सी द रीजन. स्ट्रेस किसके साथ रिलेशन पे है? स्ट्रेस रिलेटेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स. स्ट्रेस इज रिलेटेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स. दैट मीन्स डिफॉर्मिंग फोर्स बाय एरिया. यस. एंड डिफॉर्मिंग फोर्स मीन्स बॉडी डिफॉर्म होने के बाद स्ट्रेस कैलकुलेट करोगे. दैट्स द कॉन्सेप्ट. सो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे मीन्स, सो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा? बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा ना. उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेस को. दैट मीन्स वी कैन से, सो डिफॉर्मिंग फोर्स, सो बॉडी डिफॉर्म होने के बाद, बॉडी डिफॉर्म होने के बाद स्ट्रेस कैलकुलेट होगा. Yes, that means we can say strain generate first. Strain generates first. I hope it is clear. Yes. Next, let's discuss types of modulus of elasticity. So types of modulus of elasticity. ये कितने वेराइटीज का है? 3 टाइप्स. इट इज ऑफ 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? फर्स्ट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. नेक्स्ट वन इज, सेकेंड इज अवर बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. एंड थर्ड थिंग इज shear modulus of elasticity. Yes, so let's discuss about Young's modulus of elasticity in detail. Let's start the topic. So we can denote it as Y, Young's modulus of elasticity.
So let us consider this is your fixed rigid support and a wire is attached with it. इसके साथ एक वायर अटैच्ड है, देखो ये वो वायर। अभी क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक लोड अटैच करना है हमको। सो एट द लोअर एंड ऑफ दिस वायर व्हेन वी विल अटैच द लोड, लोड का वैल्यू क्या है, W, W इज इक्वल टू mg। यस, सो ये लोड अटैच करने के बाद क्या दिखाई देगा, एलोंगेशन दिखाई देगा सिंपली, एक इलास्टिक मटेरियल। यस, किसी भी वायर एक रिजिड बॉडी है क्या, नहीं। सो लेट लेंथ ऑफ द वायर इज, इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज L। अभी क्या दिखाई दिया, देखो दिस इज द अमाउंट ऑफ एलोंगेशन। वही एलोंगेशन को हम लोग डेल्टा L पे डिनोट करेंगे। सो नेक्स्ट, ये किसके लिए हो रहा है, फोर्स और लोड अप्लाई होने के बाद। एंड एरिया ऑफ प्रेसेशन क्या है, दिस इज A। ओके, अच्छा, सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका आंसर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और एक चीज़ हम लोग, मैं अभी नहीं लिखा हूँ जो डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड डायमेंशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस का डायमेंशन जो भी है वही सेम डायमेंशन यू कैन फाइंड। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यस, तो इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का आंसर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया, F बाई ए, सिंपली लिखो। देन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इसका आंसर क्या है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, FL बाई ए डेल्टा L। एफ को हम लोग ये भी लिख सकते हैं mg इंटू L डिवाइड बाई एरिया ऑफ प्रेसेशन को हम लोग पाई R स्क्वायर इंटू डेल्टा L, ये भी लिख सकते हैं। बस यही है फॉर्मूला किसका, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इधर एक चीज़ ऑब्जर्व करो, सो वी कैन राइट y इज इक्वल्स टू FL बाई ए डेल्टा L। वी कैन राइट दिस थिंग एज FL डिवाइड बाई एरिया को ये भी लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर इंटू डेल L। दैट मीन्स ये पता चल रहा है हमको फ्रॉम दिस फार्मूला, वी कैन से, ऐसे लिखो इसको, डेल्टा L का आंसर फ्रॉम दिस इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा L। डेल्टा L का आंसर क्या होगा, सो डेल्टा L इज इक्वल्स टू FL बाई ए वाई। यस, दैट मीन्स if force and or load and Young's modulus constant, then we can say delta L proportional to L by A। ये कब होगा, F and Y constant होने से। A का आंसर क्या है, पाई R स्क्वायर, सो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, पाई A constant है, सो L by R स्क्वायर। दैट मीन्स डेल्टा L proportional to L by A और वी कैन से proportional to L by R स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या है पता है, सो इट इज़ पॉसिबल व्हेन F and Y both are constant, when both are constant। सो इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है, देखो लैंग्वेज में ये लिखोगे, लार्जर द वैल्यू ऑफ L by R स्क्वायर और मोर इज द L by R स्क्वायर वैल्यू, मोर इज द एलोंगेशन। सिंपली ये लिखो, दस मोर इज द वैल्यू ऑफ L by R स्क्वायर, इसके रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अवेलेबल है, वी विल सॉल्व इट। वेट, मोर इज द वैल्यू ऑफ L by R स्क्वायर, इट मीन्स मोर इज द एलोंगेशन, more is the elongation। Yes, I hope this concept is clear to all of you। Yes, next proceed to one question, most awaited question of this chapter, which is more elastic, rubber or steel? It is a well known question of this chapter। So next come to your next page, that is question is, which is more elastic, steel or rubber? This is our question. In a very systematic way we have to represent it। So let us consider this is your fixed rigid support, and with this support two materials are attached. One is your rubber material of length L, another thing is steel material
दैट इज ऑल्सो ऑफ लेंथ एल। दोनों का लेंथ क्या है? एल। यस, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रबर वायर and this is your length of the steel wire. Mention this is rubber and this one is steel. So ऐसे ही लैंग्वेज लिखोगे, let us consider two wires, one of rubber and other of steel of same length attached to a fixed rigid support. Let constant force F is applied on lower end of both wires, both the wires, and ये दोनों वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बराबर। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? बराबर। दैट मीन्स ए, इट इज ऑल्सो ए सपोज, बस। सो सेम फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होगा? दोनों केस में एलोंगेशन दिखाई देगा। सो इन स्टील द एलोंगेशन विल बी वेरी स्मॉल, एक स्मॉल एलोंगेशन दिखाई देगा ऑब्वियसली। एंड इन केस ऑफ रबर द एलोंगेशन विल बी मोर। प्रैक्टिकली इट इज ट्रू। सो वी कैन से दिस इज द एलोंगेशन, सॉरी दिस इज द एलोंगेशन इन केस ऑफ रबर। यस, सो दिस टू दिस देखो, ये क्या है? एलोंगेशन इन रबर एंड दिस इज योर एलोंगेशन इन स्टील, डेल्टा एल इन केस ऑफ स्टील वायर, बस। एंड ए क्या है तुम्हारा? ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बोथ वायर्स। रेडी? So now we can say we know why Young's modulus is equal to how much? FL by A delta L. So as per this equation we can write Young's modulus for rubber material कितना होगा? देखो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है F, इसका ओरिजिनल लेंथ क्या है? L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A एंड एलोंगेशन इज डेल्टा L R, एलोंगेशन इन रबर। एंड सिमिलरली वी कैन राइट Young's modulus इन स्टील। कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? एफ, लेंथ इज एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? ए एंड एलोंगेशन डेल्टा एल स्टील। नाउ एक काम करो, दिस इज सपोज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। ऐसे करने से क्या होगा? एलोंगेशन सॉरी यंग्स मॉडुलस इन केस ऑफ रबर डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस इन स्टील, स्टील हो गया। दैट इज इक्वल टू, पहले का इक्वेशन लिखो, वाई आर इज इक्वल टू एफ एल बाई ए डेल्टा एल ऑफ आर होल डिवाइडेड बाई एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल इन केस ऑफ स्टील वायर। सो रिवर्स करो, एफ एल बाई ए डेल एल आर इंटू डेल्टा एल एस डिवाइड बाई एफ एल। सो कैंसिल करने के बाद देखो ए छूट गया, सॉरी दिस इज ए। हाँ, एरिया ऑपरेशन कैंसिल होने के बाद क्या बच गया? डेल्टा एल एलोंगेशन इन स्टील डिवाइड बाई एलोंगेशन इन रबर। बट फ्रॉम फिगर से क्या पता चल रहा है? एलोंगेशन फ्रॉम फिगर, एलोंगेशन इन केस ऑफ स्टील इज लेस देन एलोंगेशन इन केस ऑफ रबर। सो विच इम्प्लाइज वी कैन से एलोंगेशन इन केस ऑफ स्टील डिवाइड बाई एलोंगेशन इन केस ऑफ रबर इज लेस देन 1। एंड ये जो शेडिंग करके मैं दिखा रहा हूँ ना, इसका वैल्यू क्या है? एलोंगेशन इन स्टील बाई एलोंगेशन इन आर, दैट इज इक्वल टू वाई आर बाई वाई एस। हाँ, सो इसके मतलब लिखो विच इम्प्लाइज यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज लेस देन 1।
सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद पता चलेगा यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर इज लेस दैन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। दैट मीन्स क्या पता चल रहा है कंक्लूजन से, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर दैन यंग्स मॉडुलस ऑफ रबर। दैट मीन्स स्टील इज मोर इलास्टिक दैन रबर, thus steel is more elastic than rubber। बस। सो एक लाइन याद रखो, इफ डिफॉर्मेशन इज स्मॉल ऑन अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स देन मटेरियल इज मोर इलास्टिक। दैट मीन्स यहाँ से ये पता चल रहा है, ये एफ को इंडिकेट करेंगे हम लोग, दिस इज सपोज एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसमें भी एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। यस। तो लास्ट लाइन में क्या बोल रहा था, बोलो, इफ डिफॉर्मेशन इज वेरी स्मॉल ऑन अप्लाइंग ए लार्ज फोर्स देन मटेरियल इज मोर इलास्टिक। सो यहाँ पे फिगर से पता चल रहा है एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होने के बाद स्टील का एलोंगेशन क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स हम लोग ये भी सोच सकते हैं, एफ से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा, रबर मटेरियल क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। यस, लेकिन स्टील और भी एलोंगेट हो पाएगा। दैट मीन्स with increase in the force value after F or beyond F, we can say there is a chance for elongation in case of steel in comparison to rubber। रबर मटेरियल क्या होगा, इसमें इलास्टिक फैटिक दिखाई देगा, नहीं तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन सॉरी वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जो भी। तो लास्ट लाइन को हम लोग नोट पॉइंट में लिखेंगे। तो क्या लिखना है इसमें, इफ deformation is small on applying large force then material is more elastic, then material is more elastic in nature। बस। After this we will discuss very important term, breaking stress एंड ब्रेकिंग फोर्स। एक है तुम्हारा ब्रेकिंग स्ट्रेस, दूसरा क्या है, ब्रेकिंग फोर्स। यस, एक्चुअली ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या है, जब मैं स्ट्रेस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ ना, तुम लोग को सोचना है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का मतलब ये नहीं फोर्स, फोर्स का अदर नेम क्या है, लोड भी बोल सकते हो। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस मीन्स मैक्सिमम स्ट्रेस एट व्हिच वायर ब्रेक्स। यस, रिमेंबर वन थिंग, breaking stress is independent of dimension of wire। Clear? First thing, I will explain it with an example, so wait up to that moment। So first note it down, breaking stress is independent of dimension of wire। Rather, it depends on nature of material। बस। लेकिन ब्रेकिंग फोर्स कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होने के बाद वो बॉडी टूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड ब्रेकिंग फोर्स। यस, सो ब्रेकिंग फोर्स, रिमेंबर, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, area of cross section। Okay, let's listen one example। सपोज मैं तुमको बोलूँगा, एक तुम्हारा वायर, लेट अस कंसीडर दिस वायर, ये वायर को तुम लोग को कट करना है। यस, सीजर की मदद से तुमको कट करना है इसको। तो ये है तुम्हारा सीजर। यस, इसके मदद से तुम उसको क्या करोगे, कट करोगे। यस, जो भी एक कटिंग मटेरियल और कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके उसको कट करना है हमको।
सपोज एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होने के बाद ये कट हो गया, बट अभी मैं तुमको बोल रहा हूँ वही सेम मटेरियल कॉपर वायर, यस, इसको कट करना है हमको। सो कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तुम, सपोज ये कटिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको यूज़ करना है तुमको। मेरा क्वेश्चन ये, विद द अमाउंट वैल्यू ऑफ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, एफ अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई होने के बाद ये कट होगा क्या? सेकेंड वायर कट नहीं होगा। देखो सेम मटेरियल का वायर, कॉपर एंड कॉपर, लेकिन इसमें इसका एरिया ऑफ प्रेसेशन देखो, यहाँ पे क्या हो गया, एरिया ऑफ प्रेसेशन इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स। दैट मीन्स इसमें ये पता चल रहा है ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्रेसेशन। क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो मोर इज द एरिया ऑफ प्रेसेशन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग फोर्स। नेक्स्ट कम टू ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको कैसे समझोगे तुम लोग? देखो ये समझने के लिए लेट अस कंसीडर दिस स्मॉल एग्जांपल। ये सपोज तुम्हारा वेल, यस, ओके, इसमें पानी है, अभी इसमें पानी है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा लेवल ऑफ वाटर। तुम लोग क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए रोप, इसके अंदर एक रोप डाल दो एंड रोप के वन एंड से क्या अप्लाई करोगे, इसके साथ अटैच करो, एक बकेट को अटैच करना है हमको। ओके, ये एक बकेट अटैच हो गया, देखो ये एक बकेट अटैच हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी क्या करोगे, विद द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वी कैन लिफ्ट द व्हाट, वी कैन लिफ्ट द बकेट आउट ऑफ द कंटेनर, ओके, आउट ऑफ दिस बिग कंटेनर। इन सेकेंड एग्जाम्पल एक्चुअली क्या हो गया, इन सेकेंड एग्जाम्पल ये कंसिडर करो, पानी का जो वाटर लेवल ना वो यहाँ पे है, वाटर का लेवल यहीं पे है। देखो अभी हमको क्या करना है, अभी देखो वही सेम अमाउंट ऑफ रोप, सेम रोप यूज़ करना है हमको, एंड देखो यहाँ पे वही बकेट, सेम बकेट यूज़ करना है। तुम लोग अभी खींच पाओगे या नहीं, बोलो, थोड़ा सोचो इसको। इन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन लिफ्ट द बकेट आउट ऑफ द कंटेनर विद द एप्लीकेशन ऑफ रोप। लेकिन फर्स्ट केस में जो रोप अवेलेबल है वही सेम रोप, सेम मटेरियल का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम टू सेम, बराबर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम टू सेम, उसका थिकनेस सेम टू सेम, लेकिन उसका लेंथ देखो, बस यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इन सेकेंड एग्जाम्पल ऑल्सो वी कैन लिफ्ट द बकेट आउट ऑफ द कंटेनर with the value of same amount of rope, with the help of same rope but with lesser length। उसका लेंथ क्या हो गया, अभी डिक्रीज हो गया। सो ये पता चल रहा है इसमें, जो बकेट, वो बकेट क्या अप्लाई करेगा रे, वो बकेट लोड, ये बकेट के अंदर क्या है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है ना, बस। सो लोड का वैल्यू क्या है, डब्लू, फर्स्ट केस में भी लोड का वैल्यू डब्लू, बस। कितना एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है, रोप का एरिया प्रेसेशन सपोज ए, इसमें भी एरिया प्रेसेशन ए, सेकेंड एग्जाम्पल में भी एरिया प्रेसेशन ए, बस। तो इसमें यह पता चल रहा है डायमेंशन ऑफ वायर के साथ ब्रेकिंग स्ट्रेस का कुछ लेन देन ही नहीं है। यस, सो वी कैन लिफ्ट द बकेट आउट ऑफ द कंटेनर इन बोथ द केसेस, बस। सो उसका लेंथ क्या है, फर्स्ट केस में ज़्यादा, सेकेंड केस में कम है, बस। सो इसमें पॉइंट में अवेलेबल किया हूँ, देखो पॉइंट को फिर से समझो। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ वायर, ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर ब्रेकिंग स्ट्रेस का रोल कुछ भी नहीं है। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, रादर इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। सो ये समझने के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, फिर से छोटा सा एग्जाम्पल क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ, इसमें डायग्रामेटिकली आंसर दोगे, ट्राई टू टेल द आंसर। सपोज ये है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा, रुको इसको ऐसे ड्रा करेंगे, ये है हमारा वायर, एंड यहाँ पे ये वाला चीज़ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट, दिस वन इज रिजिड सपोर्ट, यस, ओके। सो इसका लेंथ क्या है, द लेंथ इज एल,
योर लेंथ इज एल सपोज, वेरी गुड। सो इसमें मैक्सिमम कितना लोड अटैच कर पाएंगे हम लोग, लेट डब्ल्यू इज द मैक्सिमम लोड व्हिच कैन बी अटैच्ड एट द एंड ऑफ दिस वायर, एंड इसका एरिया ऑफ सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ सेक्शन ए सपोज, बस ये तुम्हारा मैक्सिमम लोड, दिस वन इज मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अटैच्ड। अभी मैं बोल रहा हूँ उसका लेंथ को हम लोग आधा कर देने से क्या होगा, देखो ये लेंथ क्या हो गया L/2 सपोज, ये लेंथ L/2 हो गया। तो इसमें कितना मैक्सिमम लोड अटैच कर पाएंगे हम लोग, बोलो। यस, इसमें भी सेम लोड अटैच होगा, वही सेम एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल जो अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, कंटेनर के अंदर हम लोग सेम लोड को लिफ्ट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बोथ द वेयर्स। इधर भी सेम टू सेम कंसेप्ट में पूछ रहा हूँ। अभी क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्शन सेम टू सेम बराबर है अभी, लेकिन उसका डायमेंशन चेंज हो गया, लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया। आधा होने से भी हम लोग मैक्सिमम कितना लोड लिफ्ट कर पाएंगे, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी अटैच्ड एट द लोअर एंड, दैट इज ऑल्सो डब्ल्यू। यस, अभी मैं बोल रहा हूँ L/2 लेंथ, इसका भी वैल्यू L/2 लेंथ, बस 2 ईयर्स, वो 2 ईयर जो कट पीस मिल रहा है ना, वो दोनों का अटैच करके बस एक ही सपोर्ट में पास पास अटैच कर देने से ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्शन कितना हो गया अभी 2A। सो इन दिस केस व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड दैट कैन बी अटैच्ड, कितना होगा, दैट विल बी 2W, दैट विल बी 2W, क्योंकि फर्स्ट वायर जो जिसका लेंथ L/2, इसमें भी हम लोग डब्ल्यू अमाउंट ऑफ लोड अटैच कर पाएंगे, सेकेंड में भी मैक्सिमम लोड कैन बी अटैच दैट इज ऑल्सो डब्ल्यू। सो कितना होगा, कुल मिलाकर 2W हो जाएगा, बस मेरा कहने का मतलब यही था। यस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। यस, सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो, टू स्ट्रेस्ड cables both experiences the same stress, दोनों केबल में स्ट्रेस का वैल्यू बराबर। एंड ये भी पूछ रहा है द फर्स्ट केबल हैज ए रेडियस ऑफ 3.5 10⁻³ मीटर। अच्छा, दैट मीन्स क्वेश्चन के हिसाब से वी हैव टू राइट द गिवन डाटा। यस, सो दोनों केस में स्ट्रेस का वैल्यू बराबर, दैट मीन्स स्ट्रेस इन केस ऑफ फर्स्ट वायर, दैट मीन्स स्ट्रेस इन केस ऑफ दैट इज सेकेंड वायर। And the first cable has a radius R1 is equal to how much, 3.5 into 10⁻³ meter, and radius of second cable, that is your R2, is equal to 5.1 10⁻³ meter. Yes, and the stretching force in case of first wire, that is your F1 is equal to 270 Newton. क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन द स्ट्रेचिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड केबल, F2 का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो दोनों में स्ट्रेस का वैल्यू सेम, स्ट्रेस का आंसर क्या होगा, σ1 इक्वल टू σ2, दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2, विच इम्प्लाइज A1 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, πr1² F2/πr2², पाई कैंसिल होने के बाद और क्या बच गया, देखो F1 का वैल्यू 270 न्यूटन डिवाइड बाई R1 का स्क्वायर, ऑल आर इन ऐसा यूनिट, so 3.5 into 10⁻³ whole square is equals to F2 divided by 5.1 into 10⁻³ whole square. So after solving you will get F2 is equal to 573 Newton, nearly 573.28 Newton। ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेशन मेथड पे भी तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, अप्रोक्सीमेट वैल्यू सॉल्व करने से भी चलेगा। सो नेक्स्ट कम टू सेकेंड क्वेश्चन। देखो, तो मैक्सिमम लोड ए वायर कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। बस वही तो अभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अरे किसी भी एक वायर का लेंथ क्या था, किसी भी वायर का लेंथ L था। सो इसमें वो मैक्सिमम लोड कितना अटैच कर सकते हैं हम लोग, W। सो उसका लेंथ आधा करने से, सो पूछ रहा है व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, लेट दिस इज L/2, आधा करने के बाद देन द
मैक्सिमम लोड कितना हम लोग अटैच कर पाएंगे, वही सेम W. यस, तो आंसर इज W, रिमेन्स सेम. आंसर क्या होगा, रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी. ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आप ऑप्शन डी इज योर आंसर, रिमेन्स सेम. रीजन क्या लिखोगे, ये मैक्सिमम लोड का आंसर क्या है, दैट इज योर ब्रेकिंग फोर्स. तुम लोग लिखना चाहिए मैक्सिमम फोर्स और ब्रेकिंग फोर्स, और ब्रेकिंग फोर्स. दैट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड दोनों में तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम टू सेम है ना, सो डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस, सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, बराबर दिखाई दे रहा है बस. सो आंसर क्या होगा, रिमेन सेम ही होगा. दैट्स योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक से देखो. ए स्टील वायर कैन सपोर्ट ए मैक्सिमम लोड ऑफ W बिफोर रीचिंग इट्स इलास्टिक लिमिट. ये इलास्टिक लिमिट है ना, इलास्टिक लिमिट, उसका मीनिंग क्या है, रिमेंबर इलास्टिक लिमिट मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस के बारे में वो पूछ रहा है. गिवन जो भी गिवन है इलास्टिक लिमिट के बारे में, दैट इज योर ब्रेकिंग स्ट्रेस. सो हाउ मच लोड कैन अनदर वायर मेड आउट ऑफ आइडेंटिकल स्टील, बस. सो गिवन डाटा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसमें. पहला वाला वायर स्टील वायर, देन हाउ मच लोड कैन अनदर वायर मेड आउट ऑफ आइडेंटिकल स्टील, दैट मीन्स दोनों वायर स्टील वायर. सो वाई का वैल्यू क्या है इसमें, वाई बराबर दैट इज वाई सेम 10. देन बट विथ ए रेडियस ऑफ 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट वायर. पहला चीज़ इलास्टिक लिमिट का कंसेप्ट क्या है बोलो. इलास्टिक लिमिट मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस, बस. एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. यस, ओके. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस दोनों केस में, ये फर्स्ट केस, दिस इज सपोज योर सेकेंड केस. यस, तो दोनों में क्या सॉल्व होगा, कैसे देखो, दोनों में ब्रेकिंग स्ट्रेस का वैल्यू बराबर ही होगा. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस, रिमेंबर ब्रेकिंग स्ट्रेस, ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा ब्रेकिंग 1 इज इक्वल्स टू, इवन क्या दिया है, सिग्मा ब्रेकिंग 2. ये किसके लिए, आज मटेरियल ऑफ वायर रिमेन्स सेम इन बोथ केसेस, इन बोथ केसेस. तो सिग्मा ब्रेकिंग क्या होगा, इसका आंसर F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2. सो आज पर दिस कॉन्सेप्ट F1 का वैल्यू गिवन दे रहा है, देखो आज पर द क्वेश्चन फर्स्ट वायर में मैक्सिमम लोड कितना अटैच हो चुका है, W. सो W/πr1² इज इक्वल्स टू F2 विच वी हैव टू कैलकुलेट πr2². एंड ये भी अवेलेबल है, R2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R1, दैट मीन्स 1/2 R1. सो ये भी हम लोग लिख सकते हैं, पाई कैंसिल होने के बाद W/R1² इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई R2². R2 क्या है, R1/2, सो इट विल बी R1²/4. सो R1² कैंसिल होने के बाद सो W इज इक्वल टू F/4, सॉरी 4F. W इज इक्वल्स टू 4F, इट विल बी 4F. सो आंसर क्या मिला हमको, सो F इज इक्वल्स टू, और F2 लिखना है हमको, F2 इज इक्वल टू W/4. बस. पहले देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअली दोनों वायर का प्रॉपर्टी क्या है, सेम. दैट मीन्स प्रॉपर्टी मीन्स मैं बोल रहा हूँ मटेरियल. फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस में जो दो वायर यूज हो रहा है ना, वो स्टील वायर. पहला वाला में मैक्सिमम लोड मीन्स ब्रेकिंग स्ट्रेस उसका W, एंड लेट इट्स रेडियस इज R1. सेकेंड केस में रेडियस क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो गया, R1/2 हो गया, R2 इज R1/2. सो ब्रेकिंग फोर्स तो डिफरेंट ही होगा, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बस. लेकिन दोनों मेटल सेम है ना, सो इसीलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस बराबर. सो सिग्मा ब्रेकिंग 1 इज इक्वल टू सिग्मा ब्रेकिंग 2. सिग्मा मीन्स योर स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस, सिग्मा ब्रेकिंग is our breaking stress. I hope it is clear to all of you.
So with this, I have completed the second lecture actually. So wait up to lecture number 3. In lecture number 3, completely we will discuss the numericals related to Young's modulus of elasticity. Different levels of numerical, yes, starting from basic to advanced. Only numerical portion that will be discussed in lecture number 3. I think so. So try to share this content with your friends. So have a nice day. Thank you and have a nice day.